Hello everyone. Good evening. Good evening everybody. Good evening. I hope I am audible and visible to all of you. Yes. Tell me whether I am audible. Good evening everybody. Good evening. Yes. All right. All right. So guess what? Who has come today? ये भी आज क्लास करेगा आपके साथ. एक बार देखो इसको. ये कौन है? Can you see this? इसका नाम क्या है? ये पता नहीं कहाँ घूम रहा था. ये आ गया क्लास करने. है ना? इसको इंक्लूड करें क्लास में. बताओ. इसका नाम क्या है? आप नाम दो इसको. ये बैठ के क्लास करेगा आज. ये क्या है? पिचकू. अरे अच्छा. पिक्चू. ओके यू नो हिम. ऑलराइट. चलिए. ऑलराइट ऑलराइट. पोकेमोन तो नहीं है मेरे ख्याल से. हाँ पिक्चू. पिक्चू इसका नाम है. नहीं चलो मुझे तो नहीं पता है. ऑलराइट लेट्स लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. ये भी क्लास करेगा आज बैठ के आपके साथ. ऑलराइट. आई होप यू नो द टॉपिक. क्या डिस्कस करेंगे आज? अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट. दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक टुडे. नहीं. हाँ. चलो ये आपका पिक्चू यहीं पर है. ऑलराइट. लेट मी स्टार्ट. द अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट. ऑलराइट लेट अस स्टार्ट. अर्थ क्या होता है और एनवायरमेंट क्या होता है इसको एक बार अच्छे से देखिए. अर्थ. करेक्ट. इन द लास्ट सेशन वी टॉक्ड अबाउट द सोलर सिस्टम. नहीं. और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ में क्या क्या है. ऑलराइट. व्हाट इज दिस प्लैनेट अर्थ दैट वी कॉल द ब्लू प्लैनेट. इस ब्लू प्लैनेट को दिस right we will discover this and its environment. Okay, so let us start the first and the very basic thing. Okay, see this is the image of earth. Green earth, our mother earth, the green earth. Okay, now this year you must have felt it कि ये जो टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा बढ़ गया था. टेम्परेचर टेम्परेचर कहीं कहीं तो 43 डिग्री सेल्सियस प्लस पहुंच गया था. है ना? इट वाज टू हॉट दिस टाइम. ऑलराइट. तो ये हम लोग इसको डिस्कवर करते हैं. अब एनवायरनमेंट क्या होता है? यू सी द वेरी बेसिक थिंग. व्हाट इज एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस, ऑल ऑफ अस, ऑल आवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग एयर, देन सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स. दे मेक अप द एनवायरनमेंट. मतलब आप आपके आसपास में जो देखते हो ना वो सारा एनवायरनमेंट में आ जाता है. ओके. इट मे बी एयर दैट वी ब्रीथ, द सॉइल over which we are walking, we are doing everyday work. Then water, plants, animals, ये सारे environment बनाते हैं. Alright, they are all a part of the, yes of course people as well. Piani is saying people. Alright, animals में ही आ जाते हैं ना people. Okay, they all comprise. Yes. Then the first kind of a environment. Guess करो ये क्या है? What is this? Who can guess it? This picture depicts what? जीके के क्लास में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. बताओ. What is this? This is a desert. Yes, this is a desert. This is a desert. Correct. So desert में आप देख सकते हो. These are all the camels. Okay, desert. What is a desert? Lack of rain, dry soil, little to no surface water, high evaporation. They are so dry that sometimes rain evaporates before it can hit the ground. Okay, desert environment बहुत harsh होता है. Harsh मतलब बहुत ही बहुत ही rude होता है ये environment. Okay, वहां पर टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर कम से कम करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और मोर देन दैट. ओके, सो डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट में ये फीचर्स होता है. एक तो लैक ऑफ रेनफॉल होता है, मतलब वहां पर पानी ज्यादा बरसता नहीं है. दूसरा, सॉइल ड्राई होती है.
ओके, लिटिल टू नो सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर तो ना के बराबर होता है, एज यू कैन सी दिस इमेज, राइट, द प्रीवियस इमेज। हाई इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब सन की रेज इतनी ज्यादा इंटेंसिवली गिरती है ना, वो क्या करती है, वाटर को इवेपोरेट कर लेती है ऊपर तरफ, वाटर चलता है अब ऊपर। ओके, सो ये दिस इज अ फीचर ऑफ डेजर्ट। देन they are so dry, that means these deserts are so dry that sometimes rain evaporate just before hitting the ground। मतलब मान लो अभी यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। okay, okay, this is a cloud, all right, suppose this is this is hot, this is hot soil or sand, you can say। अब ये वाटर जो है ये ऐसा करके गिरेगा, और गिरने से पहले ही, मतलब सरफेस को टच करने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर। Okay, so this is such a harsh climate. This we call it desert. All right. Then you see, this is the next type of an environment. You can see a long stretch of grassland, and sparsely having some vegetation, big trees. मोनालिसा ये आस्किंग पिकाचू, पिकाचू कहाँ पर है? पिकाचू यहीं पर है, देखो आपका, ये पिकाचू ही है ना, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, ये पिकाचू आपका, ये यहीं पर है, बैठा हुआ है। ओके, हाँ, तो ये फॉरेस्ट, दिस इज अ ग्रास लैंड, दिस इज नॉट अ फॉरेस्ट। राइट, दिस इज अ ग्रास लैंड, है ना, और ये जेब्रा है, ये तो बात सही है। ओके, यू सी grasslands, what are grasslands? You can see, you see this grassland again। okay, you can see a stretch of grasses throughout, all right, stretch of grass throughout, all right, and what else, the grasses are, the grasses are spreaded all through। okay, that means you cannot see big trees here, all right, that means the big trees are quite absent here, all right। These are grasslands। Grasslands के features क्या होते हैं? How we define grasslands? These are wide expanses of land filled with low growing plants, and such as grasses and wildflowers। The amount of rain is not enough। देखिए यहाँ पर भी रेन बहुत ज्यादा होती नहीं है to grow tall trees and produce a forest, but it is enough not to form a desert। मतलब डेजर्ट से ज्यादा बारिश होती है, या लेकिन बाकी एरिया से कम बारिश होती है। ओके, इट इज समवेयर बिटवीन रेन फॉरेस्ट एंड अ डेजर्ट। ओके, सो दिस इज अ ग्रास लैंड। ओके, देन ये क्या है भाई, इसको देखो। अब ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ये कौन सा एनवायरनमेंट है? यस, एनीबडी? पोलर बेयर, यस, पोलर बेयर तो है ही। What is this environment? This environment is a tundra। This is called a tundra biome। This is a tundra biome। You see, this is a tundra biome। Yes, of course, it is a polar region। Yes, tundra biome is a cold and treeless plain। यहाँ पर temperature it's very cold। It's basically treeless। You cannot see big trees here, never। All right, and where harsh conditions make it hard for plants and animals to survive। यहाँ पर conditions कैसी होती हैं? Harsh conditions होती हैं, very very difficult conditions, all right, for plants and animals to survive। Around 20% of the earth's land surface is covered with tundra। all right, तो अर्थ का 20%, मतलब अगर ये ऐसा अर्थ है, तो अर्थ का ऐसा 20% पोर्शन ये कवर होता है किससे? इससे। all right, the tundra biome। okay, next, you see this is another kind of a biome। tell me ये फिर क्या है? what is this biome called now? This one is a forest। yes, this is a forest, correct। this is a rain forest। okay, rain forest क्या होता है? लेट मी टेल यू, अभी तक हमने तीन तरह के वेजिटेशन पढ़ लिए। सपोज दिस इज आवर अर्थ, राइट, जो इक्वेटर होता है ना, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर,
if you see the plants in the equatorial region, you will find big trees here. ये यहाँ पर इस रीजन में आपको बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे यहाँ पर. As you travel from this place, suppose this is a line, these are all the latitudes. यहाँ से ऐसे जब when you are traveling to the higher latitudes, alright, मतलब यहाँ से जब आप 90 डिग्री की तरफ जाते हो ना, पोलर रीजन, मतलब ये इक्वेटर है और ये वाला रीजन पोल है. These are polar region. Alright, when you are traveling from equator to the polar region, what happens basically, the size of the plants gradually gets reduced. तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो प्लांट का साइज धीरे धीरे छोटा हो गया. और थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको ना ग्रास लैंड दिखेंगे. ये ग्रास लैंड, ये these are all grassland. This is a grassland. Alright, और ऊपर अगर जाओगे ना तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा पता है? यहाँ इस रीजन में, इस रेड वाले रीजन में, दिस इज कॉल्ड तुंद्रा रीजन. आई होप अर्थ के इस मैप के थ्रू से आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं अभी जो बता रहा हूँ. आई होप यू आर एबल टू गेट इट. नहीं, ये आई एम ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट हियर, दिस वन. आई होप यू गॉट इट. So this is what the kind of vegetation. All right, so what make a rainforest? Rainforest में आप देखो रेन जो होती है बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. यू सी, दिस इज अ प्लेस वेयर यू विल रिसीव मैक्सिमम रेन. यहाँ पर बहुत ज्यादा रेन होती है, इसीलिए पानी ज्यादा है, मतलब वेजिटेशन भी ज्यादा होता है. All right, so that's why trees, plants, or giant insects like mosquitoes and all sorts of animals you can find here, like big animals like elephants, giraffe and all. Rainforests are forests that get a lot of rain. That's why they are called rainforest. Okay, and if I'm not wrong, these rainforests are called lungs of the world. Lungs of the world. एक बार चेक करके मुझे बताइए. Who can check and tell me which is called the lungs of the world? Yes, all-rounder Devansh, sir, hear me. Yes, Devansh, bolo. So this is all. This is a rainforest. Okay, they get lot of rainfall. This is yet another kind of. Devansh, tell me. Devansh, I am hearing you. This is another kind of a biome. I asked which is the lungs of the world. Yes, glimpse of happiness. What is your name? Amazon rainforest is the right answer. And this is an ocean biome, oceanic biome, or basically it's called a coral reef. This is called a coral reef. It's oceanic biome, of course, but the image you are seeing, it's a coral reef. All right, see it again. I have shown you again. This is a coral reef. Right, now what are coral reefs? Coral reefs are organisms. These are organisms and they are very tiny. Alright, बहुत छोटे होते हैं, and they are also called polyps. They are also called polyps. Polyps live on the outside of the reef. As polyps die, they become hard and new polyps grow on the top of them, causing the reef to grow. Okay, मतलब ये ऐसा है, suppose the year is, suppose I say, suppose the year is 1900. तो 1900 में यहाँ ऐसे कुछ corals थे. Alright, अब 1950 में ये corals की कॉलोनी थोड़ी बड़ी हो गई, इसके ऊपर ऐसे कोरल बन गए. अब 1900 अब नेक्स्ट ईयर आ गया, मान लीजिए 50 इयर्स के बाद 2000 में ये कोरल्स क्या हुए, और थोड़े बड़े हो गए, ऐसे बड़े हो गए. मतलब on the same coral base you will see the structure is basically rising. All right, this is what is called a coral reef. Okay, you go to Andaman Nicobar, you go to Lakshadweep, you go to Maldives, you will find all these coral reefs. Okay, so what is this? That is the what is this? Great Barrier Reef.
एक बार चेक करके मुझे बताइए, वेयर इज दिस ग्रेट बैरियर रीफ? Where is this Great Barrier Reef located? Check and tell me. Okay, Rakesh is right. In the rainforest, they have basically 4 layers. Correct. You are correct. All right. Yes, Great Barrier Reef is in Australia. Correct. Right answer. All right. Next, you see, now we are entering into the pollution and all. Okay, so we are talking about Earth and its environment. So we are talking about pollution now. So you see land pollution. आपको तो पता ही है land pollution. This is basically for different reasons. Okay, human actions बहुत ज्यादा matter करता है. मान लीजिए कोई you had a suppose फ्रूटी या तो कोई बेवरेज आपने पिया और उसको वही प्लास्टिक बॉटल को रास्ते पे ही फेंक दिया. Okay, so you are basically littering the roads. Okay, and do you know, after dumping these all in the roads and dustbins, where they go? They finally go into the dump yards. Okay, either they become landfills or they become a part of the oceanic surface. Okay, so this is what is called land pollution. All right, deterioration of the Earth's land surface at and below the ground level. Okay, in the dumping yard, what happens? They basically produce toxics. Alright, toxins produce करते हैं. They make the land infertile. मतलब उस land में जहां पर ये dumping होती है ना, they become those land mass are infertile. मतलब वहां पर आप अगर कोई भी agriculture करेंगे ना, farming करेंगे, नहीं होगा. It is caused by the accumulation of soil and liquid waste materials that contaminate the groundwater. और ये भी क्या करते हैं ना, वो जो टॉक्सिक होते हैं ना, टॉक्सिक का मतलब होता है वेरी poisonous products. Okay, they go into the water level, they make the water unfit for drinking. Okay, so this is land pollution. All right, then pollutants in the emissions. Okay, basically air pollution you can say. All right, so how air gets polluted? Number one by, I'm telling you one by one. All right, number one, natural factors are there. If you see the volcanoes, in volcanoes what happens? Volcanoes, number one. All right, when volcanic eruption take place, they emit a huge amount of ashes, then these gases. All right, natural gases, and then they pollute the air. Then next one are cars, buses, trucks, motorcycles. They emit gases. Then cities, where we are residing right now. In cities, people and different other activities, they produce these pollutants. All right, in AC, in air conditioners, you know what, or is air conditioners or refrigerators, a gas that is called freon. Freon is produced in refrigerators. All right, so that is also producing some amount of these pollutions. Okay, then fertilizer. When a farmer is using fertilizer, it is also polluting the environment in one way. Livestock, wherever you see dairy farms, they produce methane gas. They produce methane gas, which is also a air pollutant. All right, and finally, you see industry, power plants, sewage treatment plants. All right, they all produce pollutants. So ये सारे अलग-अलग sources of pollutants हैं. Okay, then as I said, air pollution. That means addition of some amount of poisonous or toxic things in the air, which makes air unfit to breathe. और वो फिर associated problems बनाती है. Then sources of water pollution. All right, next one is called pollution of water. तो वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या है एक बार देखिए. नंबर वन, ऑयल स्पिल. राइट, नंबर वन इज ऑयल स्पिल. वेट,
Yes, yes, yes. So one by one, all right. The first pollutant is called oil spill. Oil spill मतलब वो जो tankers वगैरह आते हैं ना समंदर के ऊपर, they all carry the crude oil. When they get stumbled, then it spills the oil. Okay. Then on the landmass you see combustion by cars and other whatever chemicals we are using now in day-to-day life. Ultimately, they go into the water bodies. All right, and they create pollution. Correct. It may be sewage treatments, septic tanks. All right, algae हो सकती हैं. एग्रीकल्चर में भी मतलब जो फार्मर्स फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, सारे अल्टीमेटली पानी में ही जाते हैं. आपको पता है ये जो फेस वॉश आते हैं ना, डू यू नो फेस वॉश? आई होप यू मस्ट बी नोइंग इट. फेस वॉश में ना पहले क्या होते थे, कुछ प्लास्टिक के बॉल यूज करते थे. प्लास्टिक के बॉल्स यूज करते थे, छोटे छोटे. इन अ फेस वॉश बॉटल यू मस्ट हैव सीन, ये ऐसा कुछ बॉटल है, उसमें प्लास्टिक के बॉल्स आते थे पहले. ऑलराइट, they ultimately created plastic pollution in water bodies. Alright, so nowadays along with water pollution, plastic pollution is also a big hazard. Okay, then this is water pollution. Contamination of water bodies usually as a result of human activities. ये mostly ना human activities के वजह से होती है. And has a negative impact on their uses. Water bodies include lakes, rivers, ocean, aquifers, reservoir. मतलब इन सब में कोई ना कोई फॉर्म में अगर कोई pollution हो जाए. Alright, water pollution results when contaminants mix with this water. It may be in solid form, it may be liquid form, in any form you say. It may be gaseous form. All right. Yes. 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 Rakesh, I can see that. Rakesh is giving all the detailed explanations of it. Okay. तो ये सही है. All right. Next, you see, we have a ozone layer as well. In this session, we are talking about Earth and its environment. So, how different aspects of environment affect us and different other, how they function. Okay. Ozone layer. What is this ozone layer? Just above the Earth. This is, you can see, this is our Earth. This is our planet Earth. Now, just above it, in the stratosphere, you will find a layer. In the stratosphere, you will find a layer like this. This is a very thin layer. Okay, this one is called the ozone layer. All right. Normally, oxygen जो होता है ना, वो जो combine हो जाता है ना hydrogen के साथ, it formulates water. Okay. Now, when we say oxygen, it is O2. When we say ozone, it is basically O3. 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलके बनाते हैं ओजोन. नहीं. सो स्ट्रेटोस्फियर जो है, यहाँ पर एक ऐसा लेयर है विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस. दैट मींस बेसिकली द यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, यूवीबी रेडिएशंस. Okay, now if you use certain things which are degrading this ozone layer, मतलब जैसे एक हो गया डिओड्रेंट हो गया. ऑलराइट, या तो वी आर यूजिंग रेफ्रिजरेटर्स. ऑलराइट, या तो एरोजोल वगैरह वी आर यूजिंग देम. अल्टीमेटली दे गो इनटू द अपर लेयर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर हियर एंड दे थिन इट. ओके, सो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे ये थिनिंग हो जाती है एटमॉस्फेयर की, है ना, वहां पर. दैट कॉजेस ओजोन होल देन. ऑलराइट, सो हु कैन टेल मी हु डिस्कवर्ड द ओजोन होल? अब ये ओजोन होल किसने डिस्कवर किया था, बताइए. हु कैन टेल मी ओजोन होल was discovered by whom and in which year? Yes, who discovered this ozone hole and in which year? Tell me. Okay, this is the ozone layer, as I said. Then in the water bottles, basically mineral water bottles, you must have seen this image. ये image आपने देखा होगा 3R का. Yes, 1990 में डिस्कवर किया इसको. Yes, no, it is not Isaac Newton. It is not Isaac Newton. All right.
इट इज नॉट आइजैक न्यूटन. 1990s में जो फरमैन इन 1985. जो फरमैन इन 1985. ऑलराइट. यस. सो व्हाट आर दिस 3 R's? 3 R's बेसिकली हमको ये बताते हैं कि आपको चीजों को सस्टेनेबली यूज करना चाहिए. ऑलराइट. व्हाट आर दिस 3 R's? 3 R में पहला, द फर्स्ट R इज टॉकिंग अबाउट रिड्यूस. रिड्यूस. ऑलराइट. रिड्यूस का मतलब दैट मीन्स वी कैन at least we can matlab some things are there which we can at least postpone, or at least we can deny of using them. All right, like you say, plastic bottles. Okay. Then reuse in the sense, that means recycling with, reusing the same thing. जैसे पानी का बॉटल हुआ, अगेन द सेम वेरी जनरल थिंग. पानी के बॉटल को हम लोग यूज करने के बाद उसको रीयूज भी तो कर सकते हैं. एंड फाइनली रिसाइकल. Okay. By giving it to the scrap and all, so we can recycle it. So these are all 3 R's of waste management. जो waste हम लोग generate करते हैं, that is quite big. Then there are 2 more R's that you should know. Okay. They will not tell you to explain it. They will basically ask you what are the 5 R's. Okay. So 5 R's. Number 1, reduce. Number 1. Then reuse. What is this reduce? You say donate or sell let go things that are no longer used. That means reduce. All right. Reduce. Number 2, reuse. Switch disposable items for reusable permanent alternatives. Okay. Despite of using these plastic bottles, we can opt for steel bottles and all. Then recycle. Sort your waste correctly and minimize what you send to landfill. That means recycling carefully. All right. And finally, you see the 4th R. This is the 3rd R. The 4th R is rot. That means composting. Okay. Composting those biodegradable materials. And finally the 5th one is refuse. Learn to say no to things. That means suppose I say plastic bag. Plastic bag. You must know this. All right. And I expect you to do at least this thing. आप कर सकते हो क्या, बताओ? Can you make a promise to me today that you will, whenever you will go to market, you will carry your own bag? You'll carry your own bag. You'll refuse the plastic bags. Can I expect this? Can you make a promise to Kamlesh sir? बोलो, all of you. अगली बार जब भी मार्केट जाओगे अपना कैरी बैग साथ में लेके जाना. प्लास्टिक के बैग यूज मत करना. एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं. मेक ए प्रॉमिस टू मी टुडे. ऑलराइट. चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. एटलीस्ट इतना करके हम लोग क्या कर सकते हैं. देखिए, ये एक प्रॉमिस मैंने ये आपको दिलवाया. ऑलराइट. यू रिफ्यूज द कैरी बैग्स. दैट इज प्रॉमिस नंबर 1. नंबर टू, whenever you will find that electricity is being wasted, so हम लोग उसको वेस्ट नहीं करेंगे. If you are not using certain appliances, just switch them off. Okay, आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई अप्लायंस वगैरह है आप यूज नहीं कर रहे हो ना, उसको स्विच ऑफ कर देना पूरा. फैन जरूरत नहीं है तो बंद करो उसको. लाइट्स नहीं है, बंद करो उसको. ओके. ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं. और दूसरा हो गया क्या, पहला हो गया रिफ्यूज करना, और देन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट. और थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वाटर. इतना करने से हम लोग एटलीस्ट हमारे तरफ से एनवायरमेंट को बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. ऑलराइट. दिस स्मॉल थिंग विल ऐड मच टू द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. ऑलराइट. वरना क्या हो जाएगा, देखो, ग्लोबल वार्मिंग है ना. यस. Ashani is saying if she is using a jute bag, very good. That is also very good. Jute bags. Okay, cloth bags. All right. This is our environment. This is our earth. Okay, we have to protect it. So global warming तो पता ही है आपको. The rise in the temperature of the air and oceans globally. It is happening mainly because of human burn. That is when we burn coal, oil, natural gas, cut down forests. Okay, so there are so many. Archana is saying, I promise you, sir.
Archana, thank you for that. Right? We may be small kids today, but our actions may lead to bigger, results. जो बड़े बड़े नहीं कर पा रहे हैं ना, वो छोटे बच्चे कर देते हैं, पता है आपको? देखो ये है ना, ये कौन है देखो। हम्म। सो जो बड़े लोग नहीं कर पाएंगे वो छोटे बच्चे कर देंगे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रॉमिस करो, ये 3 चीजें करोगे। यू विल नॉट वेस्ट वाटर, यू विल नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू विल रिफ्यूज टू प्लास्टिक बैग्स। ओके, चलो नेक्स्ट। सो रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? What is the solution to all these things? Renewable energy. Energy that can be regenerated multiple times. Okay. Yes. Yes. चलो, so पहला हो गया क्या? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, this is the future form of energy, solar energy. All right, these are solar panels. These are called photovoltaic cell. These are all called, और PV cell बोलते हैं इसको, photovoltaic cell. आई होप यू मस्ट हैव सीन अ सोलर पैनल। अब सोलर पैनल में छोटे छोटे ऐसे डॉट होते हैं ना, वो डॉट सारे क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड पीवी सेल्स। हम्म। So solar energy, one form of renewable energy. Then wind energy, another form of renewable energy. Third one is hydroelectricity. This is also a renewable form of energy. मतलब वो डैम्स में क्या करते हैं ना, पानी, the water is stored in a dam. All right, through small tunnels, the water is gushed into a turbine. All right, so by the force of the water, the turbine starts rotating, and finally electricity is produced. Okay, so hydroelectricity. Then biomass. When I say biomass, biomass in the sense, you see, आपके घर के पास वो गार्बेज कलेक्शन वाली व्हीकल आती होगी, है ना? एक तरफ ड्राई वेस्ट होता है और एक तरफ वेट वाला वेस्ट होता है, नहीं? Why they tell you to segregate it? Why waste is segregated at the source? Because when it is segregated, ultimately it is used for producing electricity. Okay, उसको ना incineration बोलते हैं, एक टर्म जानिए, this is called incineration. Incineration. All right, burning the biomass at a higher level, higher temperature, producing energy. And finally we have geothermal energy. Correct? Geothermal energy, जहां जहां पर the earth. What is a geothermal energy? This is our earth. All right, using the heat of earth. अर्थ की हीट को यूज करके अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, देन इट इज कॉल्ड so that is called a geothermal energy. And finally hydrogen. Right, hydrogen fuel is again a very potential form of energy. ये renewable energy है, मतलब वाटर को अगर हम लोग डिसोसिएट कर दें, वाटर को डिसोसिएट कर दें, तो एक तरफ हमको मिलेगा ऑक्सीजन और एक तरफ मिलेगा हाइड्रोजन. राइट, हाइड्रोजन इज a fuel. Now who can tell me what is Toyota Mirai? What is Toyota Toyota Mirai? What is this Toyota Mirai? So Toyota Mirai है क्या? All right, अच्छा next. Renewable energy, green energy or low carbon energy is energy from renewable resources that are naturally replenished on a human time scale. Renewable resources include sunlight, wind, movement of water, geothermal heat, ये सारा. Okay. Then what else you must know? There is a UN climate conference that is called COP26. But you must know what is the full form of COP. Okay, this is Conference of Parties. Whatever we have discussed right now, that means to save water, electricity and all. All right, these people gather at a particular place and they discuss all these things. मतलब वो कोई मतलब नहीं निकलता, फिर वो सिर्फ ऐसे अटेंड करने जाते हैं, फिर ऐसे ही फोटो वोटो उठा के चले जाते हैं, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकलता उनकी बातों से, है ना? So this was the 26th United Nations Climate Change Conference of Parties, right, that took place in Scotland, Glasgow. United Kingdom में ये हुई थी 2021 में, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी.
Then just know it. What is COP? Then, I asked what is Toyota Mirai. It is the first hydrogen car. Yes, Tamanna is correct. It is a hydrogen car. All right, biodiversity. Now, what is biodiversity? You see, this is a combination of two terms. एक तो हो गया bio, दूसरा हो गया diversity. All right, what is this biodiversity? That means diversity in living things, a variety of living things in a given place. है ना? Whether small stream, an extreme desert, extensive desert, all the forests in the world, oceans, entire planet, this is called biodiversity, which is short for biological diversity. Biodiversity, in short, biological diversity. Okay, then fracking, एक term आता है fracking. अब ये fracking क्या होता है? That means you see how it is done. मतलब इसमें क्या होता है? Hydraulic fracturing is a technique in which fluid is injected at a high pressure in a rock in order to open fissures or crack and allow trapped gas to come out. मतलब you must be knowing हमारे अर्थ के नीचे लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल है, क्रूड ऑयल प्लस गैस भी तो है. ऑलराइट, सो फ्रैकिंग के थ्रू से क्या करते हैं? ए पाइप हैज बीन इंसर्टेड. ये जो पाइप है, एज यू कैन सी इट हियर, देयर इज अ पाइप व्हिच हैज been inserted into it. ये रेड वाला पाइप है. All right, it is putting pressure. This one, this is the pipe. It is putting pressure, huge amount of pressure to the rocks. The rocks basically they open up then. All right, and they release the gas and the liquid. This is fracking. Fracking के थ्रू से हम लोग इसको कर सकते हैं. All right, then what are dead zones? I'm just telling you what are the terms. Okay, what are these dead zones? Dead zones वो होते हैं ना जहां पर कोई लाइफ की फॉर्म नहीं होती है. If you go to this part of the world, यहाँ पर क्या होता है? When fresh river water enters into ocean, what it brings, वो ना nutrients ले आती है अपने साथ. Okay, now in a dead zone, you will not find any plant, not any animal. डेड जोन्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द वाटर बॉडीज जहां पर कोई प्लांट या तो कोई एनिमल नहीं दिखते हैं, वो सारे मर जाते हैं. राइट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डेड जोन्स. ओके, अच्छा, मेकिंग ऑफ ए सिंक होल. अब ये एक और टर्म है, सिंक होल क्या है? व्हाट इज अ सिंक होल? राइट, सिंक होल क्या होता है? सपोज ये ऐसे एक बहुत बड़ा माउंटेन है. अब माउंटेन में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई ना, तो वो क्या करेगा? पानी नीचे भी तो ड्रिप करेगा. ये तो सिंपल सी चीज है, पानी नीचे नीचे जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पर एक रिजर्वेयर है किसका ना? सॉल्ट का या तो लाइम का कोई रिजर्वेयर है. व्हाट विल हैपन? द वाटर विल मिक्स विद द सॉल्ट और द लाइम एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक ए अंडरग्राउंड रिवर. ओके, एंड व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली देयर वुड बी अ केव हियर. ये जो है केव हो जाएगा. दिस वुड बिकम अ केव. Now when the earth, ये soil अगर यहाँ it is not able to bear the load, it will sink down. As a result, ये एक बड़ा सा यहाँ पर क्या होल बन गया. This is what is called a sink hole. Alright, यहाँ जो मिट्टी थी वो कहाँ चली गई? अंडरग्राउंड वाटर बॉडी के हिसाब से कहीं ना कहीं चली गई. Right, this is what is called a sinkhole. Sinkhole are very unfamous in California. अच्छा, वोल्केनो क्या होता है? We are talking about earth and its environment. तो इसमें volcano क्या होता है? Volcano क्या होता है? Suppose we have at the surface of the earth. Below the surface of the earth, there are so many the areas where you will find hot molten magma. The pressure is intense. Whenever it gets a chance to come out or a crack in the surface of the earth, it just comes out like this. मतलब ये ऐसे क्या होता है? ये अर्थ के नीचे से वो प्रेशराइज कंडीशन में नीचे आ जाता है, नीचे से ऊपर. राइट, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ वोल्केनो. ओके, चलो, एवलांच एक और टर्म है. मतलब एवलांच वो स्नोई रीजन में क्या होता है ना, बेसिकली
ये एवलांच वगैरह होते हैं। अच्छा, सुनामी, आई होप यू हैव हर्ड अबाउट सुनामी। टेल मी, व्हेन वाज द लास्ट सुनामी इन इंडिया occurred? When was the last tsunami? When India experienced the last tsunami? Anyone? Tell me. Yes. When had we the last tsunami? Hmm? Tell me. This is the end of this topic, right? And now let us talk about the questions. Question discuss करते हैं, क्या क्या सारे question है. All right. Yes, this was in 2004. Yes, we are the last tsunami in 2004. All right. I hope you can see it right now. It is visible, all of you. चलो start करें. Earth and its environment. Now फटाफट बोलते जाना. Which is the closest star to Earth? Which is the closest star to Earth? Which is the closest star to Earth? Yes, it is the sun. नहीं, I'm asking which is the closest star to Earth? अर्थ के सबसे पास वाला स्टार कौन सा है? इट इज द सन. नहीं, यस यस, राइट आंसर. ओके, द गैस विच इज मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ. अब ये कौन सी गैस है? राइट, इट इज नाइट्रोजन. राइट, 78% है. करेक्ट, नाइट्रोजन. नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स? इट इज वेरी इजी. इट इज 24 आवर्स. अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन हाउ मेनी आवर्स? इट इज, ये इजी है इसलिए मैं ही बता देता हूँ इसको. No, dash of Earth results in day and night. Yes. Now you tell me this answer. You tell me the answer of question number 4. Right. इसका आंसर तो C हो गया. Yes. Dash of Earth results in day and night. Rotation. Okay. Somebody is saying rotation. Yes. Bindushri is saying rotation. Yes. Gitanjali is saying revolution. Okay. Rotation, revolution. Both answers. Okay. What of Earth results in day and night? Okay. Now let us say this is the sun. Okay. And this is our Earth. All right. So you see this part is the day and this part is the night. If the sun's rays are coming like this, all right, so this part is the night and this part is the day. All right, now if Earth starts rotating around its own axis, मान लीजिए Earth अपने axis के चारों तरफ ऐसे घूमे, yes, from west to east, all right, then only there would be day and night. है ना? So what is the answer? It is rotation. It is not revolution. It is the rotation for which Earth, the day and night occurs. Okay, for revolution, remember, we'll talk about it later. Then what happens for revolution? Okay, rotation of her Earth happens when Earth orbits around its own axis. This is what is rotation is. Then if the dash season of the Earth is closest to the sun, in the dash season, you see, in the dash season, the Earth is closest to the sun. बताओ ये, in which season Earth is closest to the sun? Yes, in summers. Yes, of course. In summers, the Earth is to the closest of the sun. This answer is summers. All right. Alteration in the length of shadows is caused due to what? Yes. इसका आंसर बताइए. Alteration of the length of the shadows is caused due to
Yes, alteration in the shadow of the of anybody. It is caused due to what? It is caused due to Earth's revolution, not the rotation. Due to revolution of the Earth, the shadow lengthens and that shortens. Okay, suppose for an example, in summers में क्या होता है, किसी भी इंसान का, ये suppose this is the person, his shadow would be like this, ये उसका shadow होगा, right? But in winters, the same person shadow, suppose this is the person, उसका shadow कितना लंबा होगा, बहुत लंबा हो जाएगा in winters, right? And so this is the change in the length of shadow. In summer it is short, and whereas in winter, in winter it is lengthy. Okay, then our solar system is a part of which galaxy? You tell me. Our solar system is a part of which galaxy? कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी. Yes, Anuja is right. Milky Way galaxy, correct. Our solar system is a part of. Yes, yes, yes. Most of the students are giving the right answer. Yes. Shanvi is also correct. And this is a part of Milky Way galaxy. All right. There is also an Andromeda galaxy, but that is not a part of our solar system. Milky Way galaxy, our Earth is a part, or our solar system is a part of this Milky Way galaxy. Next, the Earth is called as dash planet. Tell me, easy question है. अर्थ कौन सा प्लैनेट है बताओ? रॉकस्टार आयन. अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं आपने. टेल मी, अर्थ इज द पार्ट, अर्थ इज विच प्लैनेट? यस, अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट. करेक्ट आंसर. यस, ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट है. अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट. ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. नो, a moving air. Question number 13 देखिए. A moving air is called what? What is a moving air called? ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? A moving air is called what? Wind, storm, air. A moving air is called, yes, moving air. No, it is not storm. Moving air is not always storm. Moving air is called a wind. Yes, Vidyashri is right. Moving air is called a wind. All right. Yes, Vishnu Priya correct. Gitanjali is also right. Moving air is wind. Okay, remember, very, very, very important question. Which of the following is an example of a landform? ओशन, एयर, प्लेन्स, रॉक. अब इनमें से लैंडफॉर्म का एग्जांपल कौन सा है? लैंडफॉर्म. ओके, ओशन एक लैंडफॉर्म नहीं है. करेक्ट, इट इज द प्लेन्स. एयर तो है ही नहीं. इट इज नॉट एयर, इट इज नॉट ओशन, इट इज नॉट रॉक. ओके, सो प्लेन्स आर अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. प्लेन, प्लेट्यूड, है ना ये. ओके, विच ऑफ दिस प्लैनेट्स हैव नो नेचुरल सैटेलाइट? हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, याद करो. किस प्लैनेट का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? ओके, एंड दिस आंसर इज बेसिकली विच प्लैनेट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट? एक तो मर्क्यूरी है ही, मर्क्यूरी और वेनस. दिस इज द आंसर. मर्क्यूरी एंड वेनस, दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट्स. ओके, नाउ अब असेंडिंग ऑर्डर इसको हम लोगों को प्लेस करना है. करेक्ट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन. ओके, नाउ इफ यू सी, सन से अगर हम लोग जाएं तो कैसे क्या होगा? राइट, देन फर्स्ट वी नो इट. याद करिए, ये सपोज दिस इज द सन. इफ दिस इज द सन, ऐसे है. राइट, द फर्स्ट प्लैनेट, दीज आर ऑल द ऑर्बिट्स. ओके, ये एक है, दो है, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा है. Alright, so if you see the first one, this is Mercury.
This one is Mercury, right? Then we have Mercury, then Venus, then we have Earth, then we have Mars, then we have here, we have the biggest planet, right? Jupiter. Then we have the ringed planet Saturn, then Uranus, then finally Neptune. This is the sequence, nahin? This is the sequence. Earth, then how it will be done? Then Earth, Mars, Jupiter and Saturn. Easy question tha. Earth, Mars, Jupiter, yes. B is the answer. B is the correct answer. Tanvi, yes. Tanvi, Sanjit, Vikram. All right. B is the correct answer. Then you see, next one. If there had been no sun, the color of the sky would have appeared to be, yes. Easy question है. अगर सूर्य नहीं होते, if there would be no sun, then what would be the color of the sky? You who can tell me this answer? Intelligent question है. Yes, black. Yes, rockstar. Srihan, correct answer. It would be black. All of you give the right answer, है ना? It would be black. Then, which of the following planet or has or have rings in them? बताइए. Which of the following planet has or have rings? है ना? अब इसमें से जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न तीनों में रिंग है, राइट? ये सैटर्न इज द करेक्ट आंसर. रिंग प्लैनेट बोलते हैं इसको. यस, करेक्ट आंसर सैटर्न. देन हु डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? अब ये अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसको किन्होंने डिस्कवर किया था? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे बताइए. हु कैन आंसर दिस वन? क्वेश्चन नंबर 5. Who discovered that Earth revolves around the sun? Earth revolves around the sun. Yes, Kepler. Yes, yes. Most of you are giving the right answer. All right. A, C, D, B. सारे ही आंसर है. Kepler. All right. चलिए, next question. Now, which planet is called the red planet? Which is called the red planet? Tell me. Which is called the red planet? Which one is called the red planet? Yes, it is. Yes, Mars. Mars. Somendra, correct. Mars. Mummy and Smiley. This is also correct. है ना? अच्छा, next. Now, which of the following is the biggest planet? You know it. You all know it. This is the biggest planet, that is Jupiter. Earth completes one revolution. We have discussed it. One revolution in a particular year. It takes 1 year to complete one revolution. Now, movement of Earth on its own axis is called a rotation. अपने axis के चारों तरफ घूमने को rotation बोलते हैं. And the final question you see, the last question of this session, the only planet which has life on it, which is that planet? This is Earth. The only planet that has life form that has been discovered so far, ये Earth ही है. Right? We are in search of life forms in different planets, but yet we have not found them. All right. So with this, we have come to the end of this discussion, friends. Thank you so much for your patience hearing. देखो ये भी भाई भाई बोल रहा है आपको, है ना? आपका पिकाचू. You see this one, your friend. नहीं, ये आज चलाया है कहीं से, घूमते घूमते आप ही के पास आ गया. All right, चलो. Good night, everybody. Good night. Good night.
Good night, all of you. Bye bye. Yes, sir. It's already time. Yes, I know that. Correct. When you are discussing something, then you don't have an idea about the time. Yes. Bye bye. Good night, everybody. Good night. We will meet in the next class. We'll meet in the next class with yet another topic. Okay. Chalo. Bye bye. Good night, all. Good night. Bye bye, everybody. Archana is saying that she has a big Pikachu too. Okay. चलो. I didn't know इसका नाम पिकाचू है करके. सच में I am not acquainted with this animal. है ना. तो थैंक्स टू यू ऑल. आपने मुझे बताया कम से कम इसका नाम पिकाचू है. ओके. चलो. गुड नाइट एवरीबॉडी. गुड नाइट. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट. चलो. टेक केयर एवरीबॉडी. गुड नाइट.